welcome to my channel. It's almost been like a year since I have started uploading videos on my channel, and I like and I have like been inconsistent. I haven't uploaded this all stuff like I said a lot of times, but so let it be. Okay, so actually this year is like 2025, and almost been like week has been like went by. So I started like I haven't used any social media this whole week, like, and I'm very proud of myself for that because I know not like I haven't consumed any content. I have consumed, but it was very like what I wanted to be consuming, like not the usual stuff that we consume, like so Instagram or like YouTube. I haven't consumed it at all, and I really want to document it for myself. So I really wanted to give up like my this habit of consuming content from a very long time. And 31st December, I felt like this is the very right day for me to like give up all the thing, and because that day people post so many content and everything, like how their whole year went by. एंड आई वाज लाइक डूड, अगर मैंने ये कर लिया ना कि मैंने करीब 1 जनवरी नहीं वॉच किया, तो फिर तो मैं पूरा अपने आप को झेल लूँगी, मतलब पूरे आगे के लिए. So 1st January I didn't stay home only. I literally stayed outside till evening, and then I came home, and really then this urge of like going on your phone, watching what people are doing, what they're up to, how they have how they spend their this first year. I really wanted to get that information, but I decided I won't do that. So instead of that, I started watching movies, and I think that day I just watched around like 2 movies I watched, and then I was at last of the day I felt tired and I went to sleep. Next day I woke up and still that urge of like knowing that thing is coming up, and I was like, no, I don't have to do this. I won't do this. And then again I just watched 2 movies that day again, and after I was like, this is not healthy. This is not healthy. मतलब मैं कर क्या रही हूँ? अगर मैं अपने आप को लाइक सोशल मीडिया से दूर रख रही हूँ जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन माइंडलेस कंजप्शन, सो जस्ट टू मतलब कि एक गंदी हैबिट को हटाने के चक्कर में मैं एक नया फिर से एक हैबिट को इंडल्ज कर रही हूँ अपने अंदर. सो आई थॉट कि नहीं, मैं नहीं वॉच करूँगी अब मूवीज़, मतलब अब नहीं करना. सो ऑन 3rd आई डिसाइडेड लाइक इनफ इज़ इनफ, नाउ आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, एंड आई कैन नॉट लाइक कंटिन्यू दिस वे कि मतलब मैं 2 मूवीज़ देख रही हूँ एक दिन में, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. एंड आफ्टर आई टोल्ड माई सेल्फ कि चलो 11 बजे तक मैं मोबाइल ही टच नहीं करूँगी, एंड आफ्टर दैट आई कैन वॉच इफ़ आई वॉन्ट टू एनी थिंग लाइक ऑन फोन, नॉट, एंड ऑल्सो वो भी मैं बहुत कम स्लॉट के लिए देखूँगी. सो हाँ, and that day I discovered one new thing about myself is like just because I told myself that I can't watch movies like for more than 1.5 hours, what I did instead was like I started watching these random things that I didn't used to watch on mobile, like because like photo section, gallery section, I was literally scrolling like photos of mine like for 1.5 hours, and I didn't realize कि इतना time बीत भी गया, and I was मैं क्या बकवास चीज़ें कर रही हूँ just because. देन आई अंडरस्टूड कि एट लास्ट कि नहीं है ये, मतलब वो जो आदत होता है ना मोबाइल को स्क्रॉल करने का, वो एक्चुअली एडिक्शन है, नॉट दिस कंजप्शन थिंग. कुछ भी कंज्यूम करो बट आपको वो एक स्क्रॉलिंग की हैबिट हो चुकी है. एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे इसी को हटाना है. फिर व्हाट आई डिड वाज देन कि मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, मैं पूरे 2 दिन, वीक के 2 दिन मैं बिल्कुल ही मोबाइल टच नहीं करूँगी, लाइक फॉर एनी थिंग. लाइक 6 को मैंने लाइक बिल्कुल भी मोबाइल टच नहीं किया, ना ही सॉन्ग सुनने के लिए, ना ही मूवीज़ देखने के लिए, ना ही यूट्यूब, ना ही इंस्टाग्राम, नथिंग आई यूज इट फॉर. बट देन आई डिस्कवर्ड अ न्यू थिंग अबाउट माई सेल्फ कि बिकॉज आई टोल्ड माई सेल्फ दैट आई कॉन्ट यूज मोबाइल फॉर एनी ऑफ द कंजप्शन पर्पज, सो आई डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग माई सेल्फ. लाइक आई स्टार्टेड कॉलिंग पीपल for talking to them like for an hour. So I understood कि मतलब बहुत difficult है to just get over this consumption thing, वो भी mindless consumption. And obviously it's only been a week. मैं सिर्फ 1 हफ्ते से ही ये कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा अपने आप पे भी उतना like भरोसा नहीं है कि मैं कितने दिन कंटिन्यू कर पाऊँगी. बट आई रियली वॉन्ट टू कंटिन्यू इट फॉर like at least a month where I don't consume any social media.
I think day 7 was the most rewarding among these all 7 days because that day I knew कि मतलब किस तरीके से मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ मोबाइल के थ्रू. सो उस दिन मैंने बिल्कुल भी लाइक मोबाइल टच नहीं किया. और even if I was getting bored, so I started like I went out and just did something boring things, but didn't touch the mobile. So yeah, it's and also like yeah, with time I think it gets easy to just stay off from phone. I'm not very sure about this for me right now because I still feel this urge of like just like knowing what's going around. And I have still a lot to go. Okay, so with that, bye, and I hope ki week 2 for me will be easy, and it will be more smoother than the last week. And कि और मुझे कुछ नया सीखने को मिल जाए इस week. So yeah, I'll share it with you guys on the next video. Also, if you guys like this video, please do like, share and subscribe to my channel, which is like bits and pieces